Have you ever gotten into a physical fight? Oh, yeah. You have? Yeah. Oh, I'm dying. Hurensohn. Hurensohn. In Bollywood, everything is always so hyped up, kid. I'm a star. कितने एक्टर्स को डेट किए जो लाल झंडे थे? सारे के सारे रेड फ्लैग्स है भाई, रेडी फ्लैग्स। ओह है। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा अभी। ये क्यों कर रहे हो आप लोग? मतलब Back entrance adventures, spicy talks and pure chaos. Hello चुगलखोर्स, welcome to Spice It Up. और आज मेरे फैंसी पानी पूरी के ठेले पे आई हैं मेरी धोखेबाज दोस्त एलनाज नूरूजी। Welcome, Elnaz. what kind of an introduction was this? Okay, thank you. Okay, Elnaz. So you're about to eat very spicy pani puris. Okay. And जब आप ये पानी पूरी खाओगे, you will answer really spicy questions that will force you to overshare. क्योंकि अगर सिर्फ मैं इंटरनेट पे overshare करती हूँ तो मैं पागल लगती हूँ. How are you feeling? Right now I'm fine. आगे क्या होगा वो देखेंगे, पर अभी तो ठीक है. Okay, glad to know. If I feel like having more fun, तो मैं आपको बीच-बीच में कुछ dares दूंगी. And आपके मैनेजर को हमने ऊपर लॉक कर दिया, so you can't look that way. Are you ready to begin the spice challenge? Yeah, I'm excited. So it begins. Have you ever made golgappe before? Apparently not. So what? Put it in there? Yes. Okay. Cheers. I was saying, Elnaz, you've been on both Bollywood and Hollywood sets. If you had to compare, which sets are better? And if the answer is Hollywood, which we think it is, why? क्या कमी है बॉलीवुड के सेट्स में? You're planning to ruin my career on this show? Just mine. Okay. कमी शायद इतने कमियां नहीं है, पर एक बात है जो बॉलीवुड के सेट्स पे सबको सब ऐसे स्टार लगते हैं, स्टार जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन अगर आप हॉलीवुड के सेट पे जाओ, सबसे बड़ा स्टार भी हो, वो बहुत नॉर्मली बिहेव करता है, सबके एक जैसा वैनिटी होता है, सबका एक मतलब everyone is equal. Yeah. In Bollywood, everything is always so hyped up. Ke, I'm a star. Of course. Not the masala I was hoping for, but we'll call it the mixed signals phase. Are you the kind of person who gives mixed signals to people? No, You don't? I straight. So as soon as you like somebody, you're like, मेरे घर चल. वैसा भी नहीं मेरे घर चल, पर the person will know that I like. Cheers. We all know breakups are hard. I would know breakups are hard. Public breakups are harder. But I think friendship breakups are the hardest. Yeah. Have you ever had a best friend breakup? Oh yeah. So many actually. और अभी तो recently मेरा कुछ हो गया. क्या हुआ? Nothing. A friend of mine just decided to believe other people over me, and Tell us more. Why? Who? Name names. no, I'm not dropping. Give any Instagram handles. Names. I'm not giving any names, but yeah, there was a situation where he could have spoken to me and asked me and find out, but instead of that, he went ahead and believed people who were strangers to him. So I was like, tata bye bye, and I don't even care. You don't care? Are you lying? No, I'm not lying. Okay, so if you can't tell us who he was, does he wear eccentric clothes? Do we see him on the red carpets really often? Is he like a pap child? No, I can't remember. I mean, we don't lie on this show, but if that's the path you've chosen, then maybe we'll Let's have to go. watch it on another platform. What happened? Okay. Let's go spicier. मेरे चुगलखोर्स काफी स्मार्ट हैं. You know exactly who that was. और भाई मैं तो full WWE मोड में थी. Looking for the spice. So I went straight from breakups to physical fights. This is spicy. Have you ever gotten into a physical fight? Oh yeah. You have? Yeah. You don't look like the kind. No, I know, right? Yeah. I used to be a proper boy Oh. in school. I mean, Yeah, no, Sure. I know. yeah. Back then, now it's different. Oh, I'm dying. Oh. Tell us about your favorite fight. My favorite fight was once in school. It was some break. I don't know, everyone was gathering in school. And then there was this B word girl. And she was on my last nerves for like
the whole year anyway. Yeah. I don't know, उसने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, and then I was like, चलो, let's get started. Right in the middle of the school, I started punching her, grabbing her hair. Boom, boom, tack, tack, tuk, tuk. Oh God, see, if Full you, on scene. if you get offended on this show, Yeah. it's not been written by me. And Okay. I didn't make the spice levels. So Okay. in case you want to hit somebody, I am not the right They're there. person. Yes, Okay. yes, they're there. School fights are fun, but the real fights are always with red flags. Am I right? Are you a red flag? मैं red flag? मैं पूछ रही हूँ भाई. नहीं, नहीं, मैं नहीं हूँ. नहीं हो? नहीं. Why do you think so? मैं बहुत green हूँ. आप हमें बताओ आपने कितने एक्टर्स को डेट किए जो लाल झंडे थे? Actually सारे के सारे red flags थे. Oh जो God. मैंने date किए. क्यों? क्या किया उन्होंने ऐसा? पता नहीं, बस सब ऐसे ही हैं. सभी कुकू. सारे के सारे रेड फ्लैग्स है भाई, रेड ही फ्लैग्स. बस फ्लैग ही रेड फ्लैग, रेड. मैं रेड फ्लैग्स पे साइलेंस ही चूज करूंगी क्योंकि नेक्स्ट सवाल ऑलरेडी टू स्पाइसी टू हैंडल था. भाई साहब ये क्या है? ये क्यों कर रहे हो आप लोग? मतलब इसमें क्या मजा आ रहा है? Okay. Have you ever been to a strip club? ओ यार, How was it? Explain in detail. Give us Google Maps का link. मैं एक बार, ओ बाप रे, ये तो इसके बाद बताना पड़ेगा, पर ये आप भी बताऊंगी. I have been to a strip club in Las Vegas. Okay. Yes, अमीरों का strip club. और एक तो मुझे बहुत डर लग रहा था पहले जाना. फिर वहां जाके एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़की मिल गई जो वहां पे स्ट्रिपरी थी. This is so spicy. My brain doesn't work anymore. She was a director. Oh. And she was also a part-time stripper. stripper. मैं तो लास वेगस जैसे स्ट्रिप क्लब्स में नहीं जा पा रही हूँ, मेरा यूएस वीजा नहीं लग पा रहा है, पर मैं थाईलैंड के स्ट्रिप क्लब्स में गई हूँ. Oh shit. सो जैसे 10th में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स करके एक चैप्टर होता है, उसमें आपको पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी क्या क्या कर सकती है. हाँ. फिर आप थाईलैंड के स्ट्रिप क्लब में जाते हो, आपको पता चलता है जेन्युइनली ह्यूमन बॉडी क्या क्या कर सकती है. Really? या इट्स अ मिरेकल. Yeah. ओके. Okay. वेयर एट द चले लास्ट. थाईलैंड. यस पक्का. हैं? Seriously now? बट आप बिकनी नहीं पहन सकते हो फिर थाईलैंड जाके, क्यों? बिकॉज यू लुक टू हॉट एंड आई वोंट. और मेरा पेट ऐसे थिथुलता रहेगा इधर उधर, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. Everyone knows I love learning new things, especially galis. So I dared Elnas to teach me some German ones. And well, here's how that went. वी हैव अनदर डेयर. अरे बाप रे. मुझे सीखने का बहुत शौक है. क्या आई सीखना लव है? लर्निंग. हाँ बोलो. तो आप मुझे जर्मन में कोई गाली सिखाओ. You want like medium or bad? Spicy. We only do spice. Hurensohn. What does that? आपने मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे को ही लगा के कहा है. Like you looked at me and you just knew what No, to say. it can't be you because it's for a guy, so it can't be you. Hurensohn in German is big. It's not a गाली. Arschloch. नहीं. और कुछ सिखाओ. अरे, we don't have more than this. बस इतने में गाली गलौज खत्म हो जा रहा है तुम लोगों का. So say ना Hurensohn. 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 So my Kaleshi viewers, ऐसा तो हो नहीं सकता that I call a girly pop on my show and not bring the boy drama, right? I'm scared. Cheers. It is too much. तो ओके, क्योंकि आप बहुत फेमस हो, आपकी प्रॉब्लम्स अलग है लाइफ में, पर आपने कभी किसी को अपने घर में स्नीक इन किया है? हाँ. This is very hot. Now the episode was already hot, but that last Golgappa burned more than the questions. Poor Elnas.
Okay. Oh. कहाँ जा रहे हो आप? कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया भाई हमने, सारे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा. बताओ. ओके. ओह. मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा अभी. What is the one Bollywood actor that you would like to do all this with in a film, of course? इन फिल्म. हाँ चलेगा, फिल्म में कर सकते हैं. किसके साथ करोगे? नाम तो लो आप. रियल लाइफ में तो हम ऐसे ही नाम जोड़ देंगे. वो मैं करूँगी आदित्य रॉय कपूर के साथ. आदित्य रॉय कपूर is something. Yeah. और तुम? किसी के साथ भी चलेगा मुझे तो. मूवी तो दे पहले घुस मुझे भाई. Beggars can't be पर choosers. if you were to like if I love Alia Bhatt. I love Alia Bhatt too much. Otherwise, अगर if I didn't, then I would say Ranbir Kapoor. अच्छा. But लड़का ना. since Ranbir is married, no. Yeah, I heard it. What? Who? What did he say? I said Ishan Khatri. Yeah. I'm fine. That was something I would have said. बच्चों के साथ हिलना. Good one, girl. Good one. So, Elnaz, we've come to the end of this episode. How was your experience? It better be a 10 on 10. Yeah, it was great. I'm just burning from the inside and the outside and every part of my body possible. But We love that. That was our goal. क्योंकि gossip तो आपने दी नहीं your हमें. goal with your golgappe. हिंदी सीख रहे हो आप. Yeah. Let's go.